everyone, and a very good afternoon to all of you. So in this video we will be solving a problem which is reveal cards in increasing order. Leetcode 950 problem. So let's read the problem statement. So problem is say that you are given an integer array deck. There is a deck of cards where every card has a unique integer. The integer of ith card is jack of I. Okay, you can order the deck in any order you want. Initially all the cards as I start face down. It means unrevealed in one deck. Okay, you will do the following steps repeatedly until the all cards are revealed. So these are two steps, three steps. So take the top of the card of the deck, reveal it, and take it out of the deck. Means first step that we have to do is we have to take the top of the card and we have to reveal it and we have to pop it. Means and we have to take it out of the deck. Then second step is if there are still cards in the deck, then put the next card of the next top of the card to the deck of the bottom of the deck. It means if there are more cards, like if firstly we have to it means we have like five cards. So firstly we have to see like first card is there, so we have to reveal it and we have to pop it out of the deck. Then we will see like there are more cards out there or not. If there are more cards, like if if there are more cards, then in that case what we'll do, we'll take the take the second card and we will pop it and we will push it on the end of the array or deck. If there are still unrevealed cards, go back to the first step and otherwise stop. So we have to return an ordering of the deck that would reveal the cards in increasing order. So note that the first entry of the card is considered to be the top of the deck. So basically problem is saying that we have a bunch of cards. We have a bunch of cards. If first card is there, we will take it, we will reveal it and we will pop it. Second card is there, we will take that card and we will push that card to the end of the array or deck array. So by using this, let's do the code, then we will see the dry run for that. So you can see here what we are doing is we are taking in second step we are taking the card from the top of the array and we are pushing that card in the at the bottom of the array. So we are taking the card from the front and we are pushing that card at the back. So it is like a, we are using which data structure is good for this, the data structure that is a DQ, because in DQ what we can do is we can push our front from the array from the top and we will push and pop at the bottom also. So this line is important, like return an ordering of the deck that would reveal the card in increasing order. So let's do the code by simply using three steps. So what we'll do here is we'll create a DQ of int DQ. Now int n equals to deck dot size, and we are creating a vector also so that we can store one answer. So vector int answer of size n. Initially all the elements of the vector is empty or zero. Now what we'll do, we'll create two variables like int chance equals to 0 and int Philip equals to 0. Why Philip equals to 0? Because Philip is showing like first, if first card is there, then we have to reveal it. If second card is there, we उस कार्ड को उठाएंगे एंड में पटक देंगे. Then third card is there, we will reveal it, and fourth card is there, we will take that card and we will push that card at the bottom of the array. So it is like flipping. पहले उठा रिवील कर रहे हैं, फिर उस दूसरे कार्ड को हटा रहे हैं, मतलब उसको नीचे को बॉटम में रख रहे हैं, देन उसको रिवील कर रहे हैं थर्ड वाले कार्ड को, उसको हटा रहे हैं, देन उसको फोर्थ वाले कार्ड को नीचे रख रहे हैं. तो इट इज लाइक फ्लिपिंग, वी आर फ्लिपिंग द कार्ड्स. सो नाउ we are applying a loop like if dq dot size is greater than 0, then in this case what I'll do is we have to check if Philip equals to 0. if Philip 0 है, ठीक है, 0 इट्स शोइंग लाइक कि हम उस कार्ड को रिवील कर रहे हैं. ठीक है, रिवील कर रहे हैं तो उस कार्ड को रिवील करने का मतलब क्या हो गया, वी हैव टू चेक लाइक कंडीशन आंसर ऑफ dq dot, actually we have to push the indexes in that dq also. So we will apply a loop for int I equals to 0, I less than n, then I plus plus,
एंड डी क्यू में क्या पुश करेंगे, डी क्यू में वैल्यूज पुश नहीं कर रहे हम, ठीक है, इस डेक की। आई विल टेल यू व्हाई वी आर नॉट पुशिंग द वैल्यूज इन द डी क्यू, we will just push the indexes. So dq dot pushback of I, it is like कि हम इंडेक्स पुश कर रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 इंडेक्स पुश कर रहे हैं dq में। नाउ व्हाट वी विल डू इज इफ dq डॉट फ्रंट, इफ अगर flip equals to 0 है, if dq dot front, if flip equals to 0, then what we will do, dq dot front, dq dot front is showing the index, so answer of dq dot front is showing the value of that particular index equals to deck of chance। deck of chance क्या होता है, initially chance is 0, so deck of chance is showing the value जीरोथ इंडेक्स पर जो वैल्यू पड़ी हुई है, और इसको प्लस प्लस भी कर देंगे जो कि आगे हमें यूज करना है, और उसको पॉप भी कर देंगे। अब मैंने वो वैल्यू रिवील कर ली है, रिवील कर लिया मतलब उस वैल्यू को, उसको मैंने आंसर वेक्टर में डाल दिया। नाउ आई हैव टू पॉप दैट वैल्यू, सो dq डॉट पॉप फ्रंट, it is like a index, we are popping the index because index को पॉप कर लो या उसकी वैल्यू को, करस्पॉन्डिंग वैल्यू को पॉप कर लो, ठीक है। इन एल्स केस व्हाट वी विल डू, एल्स केस का मतलब क्या हो गया कि हम उस जो भी वैल्यू पड़ी हुई है फ्रंट पे उसको बैक में डाल रहे हैं, मतलब बॉटम में डाल रहे हैं डेक के। सो इन दैट केस व्हाट वी विल डू, dq डॉट पुश बैक, उस वैल्यू को उठाएंगे, उसको नीचे को डाल देंगे, तो dq डॉट पुश बैक ऑफ dq डॉट फ्रंट, जो कि फ्रंट में वैल्यू पड़ी हुई है उसके dq में, उसको एंड में डाल देंगे, ठीक है। देन व्हाट वी विल डू, उसको पॉप भी तो करना पड़ेगा ना, dq डॉट पॉप फ्रंट, उस वैल्यू को पॉप भी कर दिया। लाइक वी हैव अ स्टैक, लाइक वी आर टेकिंग एग्जांपल, लाइक वी हैव अ 6 कार्ड्स, सो फर्स्ट कार्ड को जो वैल्यू आएगी उसको मैं रिवील करूंगा और उसको आंसर में डाल दूंगा। तो आंसर ऑफ dq डॉट फ्रंट, dq डॉट फ्रंट इज शोइंग द इंडेक्स, आंसर ऑफ dq डॉट फ्रंट इज शोइंग द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडेक्स इज इक्वल टू डेक ऑफ चांस, चांस इनिशियली 0 और उसको चांस को इंक्रीज कर दे रहे हैं और उसको वैल्यू को हटा दे रहे हैं। इफ सेकंड कार्ड इज देयर, सेकंड कार्ड को मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसको उठा करके नीचे डेक के नीचे रखना पड़ेगा, बॉटम में रख देना पड़ेगा। तो उस केस में क्या करेंगे, dq डॉट पुश बैक ऑफ dq डॉट फ्रंट, dq डॉट फ्रंट में जो इंडेक्स है उसको नीचे को पटक देंगे, ठीक है, dq में, और dq डॉट पॉप फ्रंट कर देंगे, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस I have, I have to change this flip also, because if flip equals to 0 then we'll do this. If now I have to change this flip to 1, then 0, then 1, then 0, it is like flip zor equals to 1. Now this have been done. Now we'll return our answer. So now let's do the code and see if this will work or not. Actually, one mistake I've done is I have to sort this also. So sort of deck dot begin comma deck dot end. Now again let's run this and see if this will work or not. That is working perfect. Let's submit this code. Yeah, you can see here it is taking 3 millisecond time, and yeah, it's a good solution. So in this solution what I have done is I am simply using the three conditions here, three condition nahi, only two conditions, three third condition तो repetition है। So what we are doing is we are just creating a dq, why we are creating dq, because we have to just take the index from the front and push that index from the back of the array. So dq is the data structure that we can use in push front from the front, push and pop from the front, and push and pop from the back also. So we are using dq. Now we are sorting the array, and these are the variables, and we are storing the answer. So that's why we will create answer vector. Initially all the values of the answer vector is 0, and we are creating two variables, chance and Philip. Initially both are 0. Philip is showing like
यहाँ पे लिख भी देता हूँ कमेंट में, 0 then 1 then 0 0 then 1 then 0 then 1। ठीक है, फिलिप तो क्या कर रहा है, 0 1 0 1 0 आता है तो उसको 0, इट इज लाइक 0 की फर्स्ट वैल्यू होती है, उसको मेरे को रिवील करना पड़ेगा, पॉप भी करना पड़ेगा, उसको आंसर वेक्टर में डालना पड़ेगा। सो मैं क्या कर रहा हूँ, डीक्यू में जो भी है, डीक्यू में सारे इंडेक्स को स्टोर करा रहा हूँ। नाउ वी आर storing the answer of dq dot front equals to deck of chance, and we are popping out from the stack from the dq also। and else case में क्या होता है, if Philip equals to 1, in that case what we will do, we have to take that index and we have to pop it, and so here we are popping it and we have to push it at the end of the array. So dq dot pushback of dq dot front, and finally we are changing the flip also, 0 1 0 1 0 1 like this. So this was the code. So if you see the dry run, if you want to see the dry run, then you can see this. Here is the good dry run. You can see here is a deck array. What we are doing is we are just initially sorting the deck. After sorting 2 3 5 7 11 13 17 will come. Now we are initializing the variables. Result is showing the answer vector. All the values of the answer vector initially 0. The dq is this one because in dq we are storing just indexes. So 0 1 2 3 4 5 6. Then first card if 2 is come, first card is like this, first card is like this, so 2 is come, so index equals to 0. So result after assigning 2 at index is 2 0 2, then all value of 0, then after this the value is next index is 1, so 1 वाले इंडेक्स वाले की वैल्यू को मेरे को एंड में भेजना पड़ेगा, तो 1 इंडेक्स पे खड़ा पड़ा हुआ है तो उसको मेरे को एंड में भेजना पड़ेगा। So now my DQ will be 2 3 4 5 6 1 because we are storing the indexes। तो 3 पड़ा हुआ है, 3 कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, 0 1 1 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, तो 1 इंडेक्स वाले को एंड भेज देंगे, तो 2 3 4 5 6 and 1। So after this we will do this second step, third step, fourth step, fifth, sixth, seventh, and this is the final answer। So you can see this dry run, it is a good dry run actually। So this was the code। If you find this helpful, then please like, share, and subscribe। तब तक के लिए bye। And let's discuss about the time and space complexity। So here we are just traversing the array only one time। So here the time complexity will be big of n, and also the space complexity will be big of n because we are just using the dq, and we are just sorting it for n log n time complexity also। So this was the code. So if you find this helpful, then please like, share, and subscribe।